This is the diagram for internal structure of human heart. Either of these diagram will be asked for exam, but we are going to learn how to draw this internal. This is little complicated, but it's quite easy. If you practice it, then it will be easy. If you don't practice it and you just look at it, it's going to be difficult. So we are just going to practice how to draw this, okay? So the atrias, ventricles, atrias are having thin wall, ventricles are a little bigger, they are receiving chambers, they just pump the blood also. And where does the ventricle throw the blood? This side also ventricle send the blood to the body. So basic thing is, if you know this diagram really well, and the blood comes in from the superior as well as inferior and the coronary sinus into this atria, and from here the blood goes to the ventricle. This is the ventricle of the right. Upper atria is divided from the ventricle. That means the right atria is divided by the ventricle with the help of a wall present here. You call that wall as tricuspid wall. Similarly, on the left side there is a wall called as bicuspid wall that divides the left atria from left ventricle. These walls are important because we don't want blood to go in opposite. This should be the direction of the blood from atria to ventricle. But when there is a contraction means the ventricle will get squeezed, or we can say just reduce in size because of the systole. Systole will happen, then what will happen? The ventricle will contract. During that contraction, the blood should go to the respective places, right? So it should not go in opposite direction. ये opposite direction को prevent करता है ये जो wall यहाँ पे दोनों तरफ. Walls are there so many places, but you have to learn these, okay? Then you have the structure that's holding the walls. These walls are held by the chordae tendineae on the papillary muscles. You have papillary muscles here, structure like here. These are holding the chordae tendineae. Just see it very clearly. Papillary muscles are also there. That's helping the chordae tendineae bind to this region. Let's see the labeling once again. Superior vena cava is fine with everybody. Then pulmonary artery. You are knowing that. Right pulmonary artery, okay? This is right pulmonary artery. इस तरफ हमारा you have the left pulmonary artery. इस पूरे बड़े structure को हमने बोला है pulmonary artery itself or pulmonary trunk, okay? So इस पूरे pulmonary trunk को हमने एक, it goes to the right and one goes to the left because you have two lungs, no? दोनों तरफ जाएगा blood purification के लिए. और कहाँ से जाएगा? From your right ventricle, right? From your right ventricle. Then here you should be able to remember the opening of superior vena cava. Then you can remember tricuspid wall. You can remember right atrium. This is the right atrium. So we know we have the 4 chambers. 1, 2, 3, 4. Right? 4 chambers. So labeling of those 4 chambers is going to be easy for you. Atrium, ventricle, right atrium, right ventricle. Then you have the left atrium and the left ventricle. Then between 2 ventricles there is a wall. This wall is also an important labeling. You call that as interventricular septum. And I think all the labelings are okay. Columnae carneae. What is this columnae carneae? There are ridges over here. These ridges are called as columnae carneae. That makes the rigid surface, okay?
Now, when you're talking about the labeling, this must be very clear. Now you have to learn how to draw it, so you have to practice this diagram. So let's see one video wherein we can understand how to draw the internal structure of human heart. Must have got little idea about how to draw the structure of heart. Now you'll say कि वॉल्व इसके अंदर विजिबल नहीं है, टेक्स्ट बुक के अंदर वॉल्व एक्चुअली विजिबल नहीं है. दे हैव जस्ट शोन द कॉर्डे टेंडन emerging with the wall. तो you can draw it that way, which has been even in the next figure 8.21 में वॉल्व अच्छी तरह दिख रहे हैं, ट्राइकस्पिड वॉल दिख रहे हैं, तो आप वहाँ पे भी ऐसे बना सकते हो. सो दैट्स इम्पॉर्टेंट. You have to draw those tricuspid and bicuspid wall, because without them you cannot actually show the proper structure of heart. Now we are going to understand the cardiac cycle. When you talk about contraction and relaxation, that comes to be the cardiac cycle. मतलब आपका heart पहले contract करता है, then it will relax. So this contraction is used by the word systole and relaxation is called as diastole. So one contraction and one diastole together is called as the cardiac cycle. And it's always atria and ventricle both will not contract together. पहले atria contract करेगा, फिर
वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा. ऐसा नहीं होता कि एट्रिया वेंट्रिकल दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेगा एक साथ, बट लेफ्ट एट्रिया एंड राइट एट्रिया दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है. ठीक है, चलो अब लेट्स अंडरस्टैंड जो कार्डियक साइकिल है कितना टाइम लेता है. 0.8 सेकेंड लेता है. सो अराउंड 72 times there is cardiac cycle that's happening in a minute. So when you talk about atrial systole का मतलब है एट्रिया में आपका जो एट्रिया है, you draw the structure in general. So when blood fills in the atrium, even the right as well as the left, दोनों में ब्लड फिल हो गया, जिसके वजह से प्रेशर क्रिएट होता है, राइट. बट यू हैव टू रिमेंबर, आई एम जस्ट चेंजिंग द कलर. राइट साइड में ब्लू कलर का ब्लड कर देते हैं और लेफ्ट साइड में रेड रहने देते हैं. ठीक है, सो क्या हुआ, एट्रियम के अंदर ब्लड आया. सो राइट एट्रियम के अंदर आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो मैंने ब्लू कलर दिखाया, एग्जाम में कलर वालर कुछ नहीं है, दिस इज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग. ओके, देन लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया. तो ऑब्वियस है, आपको याद होना चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ये आया है लंग्स से प्योर फॉर्म में, राइट. इट हैज़ बीन प्योरीफाइड. नाउ दोनों एट्रिया के अंदर ब्लड भर गया, राइट. ब्लड भरने के बाद इस फिलिंग के वजह से प्रेशर एक्सर्ट होता है. कहाँ पे, वॉल्स, मतलब जो वॉल्स होते हैं यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट होता है. इट्स वेरी ऑब्वियस, व्हेन देयर इज एम्प्टी देयर इज नो प्रेशर, व्हेन देयर इज सम काइंड ऑफ सब्सटेंस इनसाइड देयर इज ऑलवेज अ प्रेशर, राइट. सो देयर इज अ प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द एट्रिया. तो एट्रिया में जैसे ही प्रेशर क्रिएट होता है, जो एसए नोड हमारा है यहाँ पे, राइट, वी हैव लर्नड एसए नोड कंडक्टिंग सिस्टम के अंदर किया था, साइनोएट्रियल नोड. जो एसए नोड है दैट गेट्स एक्साइटेड एंड जनरेट्स द कार्डियक इम्पल्स. सो बिकॉज ऑफ दिस इम्पल्स जो एट्रिया होता है, इट विल कॉन्ट्रैक्ट. सो एट्रिया विल मूव, they will squeeze, or you can simply say contract. Whatever the blood content is here, the deoxygenated blood as well as oxygenated blood will move to the next chamber, right. So you know what I'm talking about. It will move to the ventricle, right. एट्रिया का ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है और लेफ्ट एट्रिया का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे देयर हैज़ बीन रिड्यूस्ड इन दिस साइज, और वी कैन से सिस्टोल हुआ. यहाँ पे सिस्टोल का मतलब क्या है, डिक्रीज इन द साइज ऑफ एट्रिया ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, राइट. एट्रिया हैज़ बीन डिक्रीज्ड बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से यहाँ के जो वॉल्स हैं, ट्राइकस्पिड वॉल, यहाँ का बाइकस्पिड वॉल ओपन होता है एंड ब्लड फ्लोज इन द सेकेंड, और वी कैन से द लोअर चेम्बर्स, दैट्स द लेफ्ट एंड द राइट वेंट्रिकल. सो ये था हमारा एट्रियल सिस्टोल. सो व्हाट हैपेंस इन एट्रियल सिस्टोल, ब्लड pumps into the ventricle. एट्रिया के अंदर, लेफ्ट एंड राइट एट्रिया के अंदर जो भी ब्लड है, रिस्पेक्टिव ब्लड, रिमेंबर राइट में क्या बोलेंगे हम, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, लेफ्ट में कौन सा बोलेंगे, ऑक्सीनेटेड ब्लड. तो रिस्पेक्टिव ब्लड will move to the next chamber, that's called the ventricle. This is the result of atrial systole, right, AS. Now who is going to prevent the backflow of blood? ब्लड पीछे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो हु इज़ गोइंग टू प्रिवेंट? सो रिमेंबर दीज वॉल्स, ओके, दीज वॉल्स आर नॉट ओनली दिस, देर आर वॉल्स दिस साइड, दैट्स द सुपीरियर वेना कावा का भी वॉल होगा, राइट. सो यू हैव टू रिमेंबर कोरोनरी साइनस का भी वॉल है, यूस्टेशियन एंड थेबेसियन वॉल, जो हमने पहले भी पढ़ा था.
So they will prevent the backflow of, जो बहुत common question है, that what prevents or what is the function of these walls that's present in the veins and heart. What are the basic functions? So it is simply to prevent the backflow of blood. Blood should not go back. ठीक है. सो ये है नॉर्मल कंडीशन. तो एक नॉर्मल एट्रियल सिस्टोल को कितना टाइम लगता है, यू शुड बी नोइंग. बेसिकली 0.1 second and the relaxation is for 0.7 second. That's atrial diastole is for okay. Systole means contraction was for only 0.1 second, बहुत ही हल्के, बहुत ही कम टाइम का 0.1 second. Whereas diastole, that means atria का relaxation होता है 0.7 second. Okay. Now the blood is now inside the ventricular region, right? Blood is inside the ventricular region. Now the message has been passed from the sinoatrial nerve to the Purkinje's fiber and then the bundle of His that is spread all over the walls of the ventricle. दोनों ventricle में blood है. And now you have to remember, आपके left ventricle में oxygenated blood है, whereas in the right ventricle you are having deoxygenated blood, right? So because of the bundle of His, the message has been passed from SA node. SA node से message मिलता है यहाँ के AV node में. You have to remember, first was SA node, जहाँ पे जिसके वजह से एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होता है. अब वो मैसेज पास करता है किसको, यहाँ के AV नोड पे. AV नोड मैसेज रिसीव करता है और उसको फॉरवर्ड करता है यहाँ पे बंडल ऑफ हिस एंड पुर्किंजीज फाइबर में, जो कि हमारे वेंट्रिकल्स के वॉल में स्प्रेड है, राइट. बिकॉज ऑफ दिस इम्पल्स वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल. प्लीज अंडरलाइन, दैट्स द, wait, let me count for you. Around 6th line you find ventricular, 7th line ventricular systole. So what is ventricular systole? Contraction of ventricular wall. तो contraction होगा, so obviously this is going to be reduced in size, so blood is going to move from ventricle. तो ये जो oxygenated blood है ये जाएगा aorta से different body parts, right? This is the very important structure जो पूरी बॉडी में स्प्रेड होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड. और जो इम्प्योर ब्लड है इट विल गो टू द पल्मनरी ट्रंक फॉर प्यूरिफिकेशन, राइट. वेयर इट विल गो, बोथ द लंग्स, लेफ्ट एंड राइट pulmonary artery, right? So it's very important, you have to remember that. So अब यहाँ पे आप लोगों को क्या याद करना है, वेंट्रिकल में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके बाद ब्लड कहाँ कहाँ जाता है ये आपको शो करना पड़ेगा एग्ज़ाम में. सो यू हैव टू अंडरलाइन दिस. ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल राइट वेंट्रिकल पम्प्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड इनटू द पल्मनरी ट्रंक. आप डायग्राम बनाओ तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, बिकॉज व्हेन आई वाज शोइंग यू द डायग्राम आपको क्लियर था, बट आप रीड करने लग जाते हो क्योंकि आपका डायग्राम आपको याद नहीं है, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, राइट. सो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है इनटू द आयोटा. आयोटा वाज द बिगर structure which we have learned. This is how it was, no? 3 separation were there: brachiocephalic, then the left common carotid and left subclavian artery. ये तो याद करना पड़ेगा आपके. आयोटा का 3 मेन डिवीजन है, राइट. एंड अब इसके अंदर एक और चीज़ जो आपको याद होना चाहिए वो है टाइम. वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए कितना टाइम लगता है? एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन के लिए कितना लगा था? 0.1 सेकेंड. लेकिन वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए लगता है 0.3 सेकेंड, और वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन के लिए लगता है 0.5 सेकेंड, राइट. सो हियर
when ventricular diastole is happening, the wall that is closing and preventing the backflow is the semilunar wall. Let's go back and see where is this semilunar wall in this diagram. Here you can see semilunar wall. ये वॉल बहुत ज़रूरी है क्योंकि ब्लड एक बार ही लंग्स की तरफ चला जाता है, दूसरे कॉन्ट्रैक्शन का जो ब्लड यहाँ आता है उसके अंदर मिक्सिंग नहीं होना चाहिए, राइट. सो ये जो यहाँ का वॉल होता है, इट शुड गेट क्लोज्ड. सो दैट इज़ द सेमील्यूनर वॉल दैट गेट क्लोज्ड एंड दैट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो. तो एट्रियल सिस्टोल के अंदर जब आप बोलोगे तो उसके अंदर आपको याद होना चाहिए यूस्टेशियन एंड थेबेस्टियन वॉल, वेयर एज इन वेंट्रिकुलर सिस्टोल यू शुड रिमेंबर द सेमील्यूनर वॉल. ओके, एंड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, दैट इज अराउंड both atrial and ventricular it takes around 0.4 second. सो जॉइंट डायस्टॉल बोलते हैं इसको. दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स होता है, उसको हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टॉल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. यू शुड रिमेंबर कंप्लीट डायस्टॉल. रिलैक्स दोनों साथ में करता है, कॉन्ट्रैक्ट कभी भी साथ में नहीं होता. पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है. ठीक है. सो द टोटल time taken for the cardiac cycle to happen is 0.8 second. Now let's see what happens here. Every time the systole and diastole is happening, there has to be an amount of blood that is pumped out. So that amount of blood is called as हर एक every stroke, or we can say हर contraction में, ventricle के contraction में जितना blood बाहर की ओर pump out होता है उसको हम बोलते हैं stroke volume. So if in a question comes like what do you mean by cardiac output का मतलब है कि within that particular span of time कितना blood pump करता है एक मिनट में आपका heart. So that will be completed in this form, that is the stroke volume will be multiplied by the heart rate. Stroke volume है 70 ml multiplied by 72 beats or 72 times it beats in a minute, which is multiplied with 70, you get 5040, or you can say around 5 liters of blood. ml per minute is the cardiac output. Okay, then you have already went through this topic of artery and vein. आपने read किया. बहुत common question है. Draw the structure of artery and vein comes for your exam. Okay, I think few things which I have already. Diapedesis मैंने आपको WBC में समझा दिया था how they squeeze out. Then we have pulse. What do you mean by pulse? इट इज़ अ प्रेशर. ओके, जो प्रेशर जब ब्लड मूव कर रहा होता है हमारे ब्लड वेसल में से, सो जो प्रेशर क्रिएट किया जाता है ऑन द वॉल्स, दैट्स कॉल्ड एज द पल्स. सो पल्स हमें आर्टरीज़ में फील होता है, और आर्टरीज़ जनरली बहुत डीपली सिचुएटेड होती है, बट फ्यू पल्स कैन बी. सो यू हैव टू लर्न द नेम्स ऑफ दीज पल्स पॉइंट. आपके फेस पे, that is near to your cheek region or near to your lips, corner of the lips, if you touch you see the facial point on both the side it is there. Then temporal is there, आपके forehead के side में, आपके eyebrows के towards the right side, or right and left, okay, both the side. If you touch you'll feel that relaxed form में आप touch करके देखो. फिर आपकी गर्दन में जो है carotid होती है, it's the biggest one, so it's easily felt. पल्स वहाँ पे फील होता है. देन ब्रैकियल, जहाँ पे हमेशा बीपी के मशीन लगा के डॉक्टर्स चेक करते हैं. ब्रैकियल आपने देखा होगा, हाथ के कफ में बीपी का मशीन बांधते हैं, तो वो ब्रैकियल आर्टरी के लिए होता है. देन रेडियल तो बहुत कॉमन है, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा. इन जनरल when somebody comes in, a doctor comes in, quickly the doctor will grab the wrist, मतलब हाथ लेते हैं और हाथ हमारे जो थंब फिंगर के एक्सट्रीम एंड में टच करके they will see whether there is proper heartbeat going on. So that's the radial.
हाथ के मतलब आपके थंब के एक्सट्रीम एंड में. And the femoral, that's towards the inner thigh region. Popliteal is again the back end of your knee. And posterior tibial, it is the ankle, lower end of the ankle. And dorsalis pedis is on the foot, पैरों के ऊपर. Okay, so you learn few names. जो सबसे common है, it's something very common. They can ask you just name few pulse points which you remember. So it's you have to remember these names. Okay, positioning. Maybe they can ask you on the neck region, name the pulse point, carotid. Okay, where all can you find the pulse in a hand of a patient? तो आपको याद होना चाहिए. It's brachial and radial. Then we have blood pressure. So we'll do blood pressure. Now what do you mean by blood pressure? We'll go there. Okay, one more point which you missed out. 1 मिनट में आपका हार्ट 72 टाइम्स इन एन एवरेज बीट करता है, लेकिन अगर वो 72 से ज़्यादा होता है, सो यू कॉल दैट कंडीशन एज अ टैकीकार्डियक कंडीशन. और अगर 60 से कम होता है तो उसको हम कहते हैं ब्रैडीकार्डिया. दीज आर द क्वेश्चन कॉमनली आस्क्ड. अगेन स्मॉल क्वेश्चंस के अंदर, इवन फॉर योर नीट यू कैन रिमेंबर दीज. पल्स क्यों क्रिएट होता है आपको मालूम है ना? वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के वजह से पल्स क्रिएट होता है. एंड हमेशा ये दूर के आर्टरीज़ में कम, हार्ट के पास वाले आर्टरीज़ में ज़्यादा. इसीलिए डॉक्टर्स रेडियल और आपके ब्रैकियल में चेक करते हैं ब्लड प्रेशर. सो प्रेशर इज़ अंडरस्टूड क्लियरली. अगर हार्ट से दूर वाले आर्टरीज़ को हम अगर चेक करेंगे तो पल्स इतना क्लियर नहीं आएगा. एंड लेट्स सी व्हाट इज़ अ ब्लड प्रेशर. जब ब्लड फ्लो हो रहा होता है, सो वॉल्स के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है, दैट्स कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर. सो देर इज़ अ मशीन कॉल्ड एज स्पिग्मोमैनोमीटर विच इज़ ईजिली व्यून बाय एवरीबडी. ये सब ने देखा होगा डॉक्टर के पास. दिस इज़ अ मैनुअल वन. आजकल ऑटोमेटिक काइंड ऑफ आ गया है, जो कि सिर्फ कफ बांधो एंड देन you can just sit with the battery on. It will tell you the direct reading. But when you had to do it, आप लोगों को fill in करना पड़ता था air inside this cuff, and then they used to help you with this. Let's see if I can get you a video for this. But meanwhile, till now, let's just wind up right now. I'll get you another YouTube video wherein I can just show you how to take the blood pressure of a patient.